Namaskar. Good evening, viewers. You are watching House Highlights on Sansad TV. I'm Rajiv Kumar Singh. We get you today's updates from both houses of the Parliament. Let us begin with the headlines. Rajya Sabha approves Constitution SC/ST Order Second Amendment Bill. Government expresses commitment towards development of tribal community and areas. Upper House also passes New Delhi International Arbitration Centre Amendment Bill 2022. Finance Minister responds to the discussion on supplementary demands for grants in the Lok Sabha, says Indian economy better equipped than others to withstand global pressure. Beginning today with the proceedings in the Upper House, the Rajya Sabha today passed the New Delhi International Arbitration Centre Amendment Bill 2022. The bill renames the New Delhi International Arbitration Centre as the India International Arbitration Centre. The Rajya Sabha passed the New Delhi International Arbitration Centre Amendment Bill 2022, which was piloted by Union Law Minister Kiren Rijiju in the House on Wednesday. The Lok Sabha has already passed the bill on August 8, 2022. While replying to the debate, Law Minister Kiren Rijiju said that the bill will help India emerge as an attractive destination for arbitration at the global level. आज तक हमारा देश में आर्बिट्रेशन का काम तो चल रहा है, लेकिन जो मूल कारण है जिसके वजह से हम अट्रैक्ट नहीं कर पाया, हमारे ही देश के बड़े बड़े बिजनेस लोग, हमारे देश के लोग विदेश प्रिफर करते हैं. लोग सिंगापुर जाते हैं, लंदन जाते हैं, हांगकांग जाते हैं, अलग अलग जगह जाते हैं. कई कारण है सर, लेकिन मैं मानता हूं कि इस पहल के बाद हम कई ऐसा चेंजेस आगे देखने वाले हैं जिससे हमारे उभरता हुआ आर्थिक शक्ति के साथ साथ हम एक मैग्नेट की तरह दुनिया का बिजनेस कम्युनिटी को हम इंडिया में अट्रैक्ट कर सकते हैं. संख्या के दृष्टि से आप देखेंगे, दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर जो दिल्ली हाईकोर्ट के माध्यम से उसका देखरेख होता है, पिछले साल 3,704 केसेस रेफर हुए हैं. लेकिन अब इसको बिजनेस का वॉल्यूम के हिसाब से कम हो सकते हैं, लेकिन हमारा देश ही इतना विशाल है कि हमारा अपने अंदर में अगर विदेश से नहीं भी आए, हम तो इंटरनेशनल बनाना चाहते हैं, अगर हमारे देश के लोग बाहर ना आ जाए, इतना भी अगर हम कर सकते हैं प्राथमिकता देकर के, ये भी हमारे लिए बहुत एक सफलता प्राप्त होगा. इसलिए सर सबसे पहले तो हम हमारे देश से बाहर जाने वालों को हम कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं. Initiating the debate on the bill, Congress MP Vivek K. Tankha supported the bill and said, "We want India to emerge as an international arbitration centre." BJP MP Sushil Kumar Modi too stressed on the need for improving standard of the centre, citing that Amazon future arbitration case is going on in Singapore. DMK member P. Wilson also supported the bill. Members cutting across party lines took part in the discussion. I have no reason to oppose any of the provisions which have been proposed, and especially the change of name, because an arbitration center for India cannot be just named as New Delhi International Arbitration Center. It has to be India's arbitration center. So this is a welcome change, because you'll have to bring more units of this in other cities. So naturally, New Delhi cannot be the only place where you have an arbitration. बड़ी मात्रा में भारत के अंदर विदेशी पूंजी निवेश हो रहा है. बड़ी संख्या में कंपनियां भारत के अंदर पूंजी निवेश कर रही हैं. भारत की कंपनियों के साथ समझौता करके वो पूंजी निवेश करती हैं. तो अगर किसी प्रकार का विवाद हो गया तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इंतजार करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वर्षों लगेंगे. वो चाहते कोई ऐसी प्रक्रिया हो जिससे कि दो कंपनियों के बीच के अंदर का विवाद, कोई कॉन्ट्रैक्ट है उसका विवाद, और आर्बिट्रेशन के माध्यम से और सुलझा लिया जाए. We have seen that the arbitrators, while even I was acting as the arbitrator, we would like to get better facilities for conducting the business of arbitration, which is lacking.
If that facilities are provided with, then what is the good of changing the name? सिंगापुर के स्टेट का कैरेक्टर हमसे बिल्कुल अलग है, तो हमारी अपनी परिस्थितियों, प्राथमिकताओं, दुविधाओं, विसंगतियों, संश्लिष्टताओं के मध्य में हमारा आर्बिट्रेशन सेंटर बने. Ad hoc arbitration. The parties are unable to mutually agree on an arbitrator. Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act 1996 empowers the Supreme Court or High Court to appoint an arbitrator. However, the biggest problem in this regard is the courts take several months to appoint an arbitrator, thereby it results in substantial cost to the parties. Sir, this defeats the very purpose of arbitration. It meant to be fast. करोड़ों मुकदमे कोर्टों के अंदर लंबे समय से लंबित हैं. यदि हम उनको भी जल्द समय के अंदर निपटा सकें तो दुनिया के देशों की विश्वास हमारे देश के आर्बिट्रेशन सेंटर पे भी बढ़ेगा और न्याय प्रणाली के बीच के अंदर भी बढ़ेगा. Sir, what our country need is a robust arbitration regime. Mere changing the name would not do the job. We have to rehaul the Arbitration Act so as to achieve the real intention of the Act, sir. अगर हमें इंटरनेशनल सीट बनाना है, जो बाकी हम सारे देशों की बात कर रहे हैं, why is Singapore a success story? Why is London a success story? That is because उनके जो ecosystem उन्होंने बनाया है, वो ecosystem matches as to the expectation of the people. So just last 1 minute, उसमें आप ऑनलाइन हियरिंग की प्रावधान करें, आप आर्बिट्रेशन बेंचेस बनाएं, आप स्पेशलिस्ट आर्बिट्रेशन बार बनाएं और अक्रेडिटेशन दें आर्बिट्रेटर्स को. अक्रेडिटेशन मिलेगा, so probably there will be an increased sense of confidence. Sir, I take this opportunity to introspect whether the bill, that original principle act that we have passed, whether it has achieved its objectives. Whether speedy disposal is happening? No. Whether it is cost effective? No. Whether with minimum or no judicial interference? Again, no. Sir, small commercial organizations are suffering. They are not able to come to these arbitration centers because it is extremely expensive. The Parliament today passed a bill to include the Gond community in the scheduled tribes category in parts of Uttar Pradesh. The Rajya Sabha passed by a voice vote the Constitution, Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order, Second Amendment Bill 2022. The bill has already been passed by the Lok Sabha. With the passage of the bill, the Gond community has been excluded as a scheduled caste in the 4 districts of Uttar Pradesh: Chandauli, Kushinagar, Sant Kabir Nagar and Sant Ravidas Nagar. At the same time, it has been recognized as a scheduled tribe in these 4 districts. Replying to the discussion on the bill, Tribal Affairs Minister Arjun Munda said the issue has been pending since 1980s. He said that through this legislation, the government is fulfilling the long-pending demand of the community. इस देश में भारत का नया उदय हो रहा है जब जनजाति समाज को मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा उठे और जनजाति समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान मिले. और इसलिए इस देश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कहा गया कि जनजाति समाज गौरव दिवस के रूप में. Munda said the budgetary allocation for scheduled tribes component has increased from 24,000 crore rupees in 2013-14 to over 85,000 crore rupees in 21-22. He asserted that steps have been taken for education and economic development of scheduled tribes in the country. 2013-14 में आप यदि देखें तो जो एसटी कंपोनेंट के लिए जो राशि आवंटित की जाती थी उसका जो कुल प्रावधान था वो 24,594 करोड़ रुपया था. लेकिन अगर आप देखें आज के दिन में 2021-22 में तो वो लगभग 85,930 करोड़ रुपये है.
तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोच में और डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अगर वृद्धि को देखें तो वो 256% से अधिक है। The upper house on Wednesday lamented the demise of former members Yogendra K. Alag and R.C. Singh. Honorable members, I refer with profound sorrow to the passing away of Sri Yogendra K. Alga and Sri R.C. Singh, former members of this house. Sri Yogendra K. Alag passed away on the 6th December 2022 at the age of 83 years. Sri Alag served as a member of this house, representing the state of Gujarat from November 1996 to April 2000. In the passing away of Sri Yogendra K. Alag, the country has lost a noted economist, an eminent economist, and an able parliamentarian. Sri R.C. Singh passed away on the 10th December 2022 at the age of 78 years. Born in November 1944 at Shahjadpur in Mhow district of Uttar Pradesh, Sri Singh, an agriculturalist and a social worker, was actively associated with the trade union movement. He served as a member of this house representing the state of West Bengal from June 2008 to April 2012. In the passing of Sri R.C. Singh, the country has lost a veteran trade unionist and able parliamentarian. We deeply mourn the passing away of Sri Yogendra K. Alag and Sri R.C. Singh. I request members to rise in their places and observe silence as a mark of respect to the memory of the departed. Deputy Chairman Harivansh on Wednesday urged the opposition members to allow the House to function peacefully as the opposition demanded discussion on the clash between Indian and Chinese soldiers at the LAC border. He said that precedents are in place when discussion on sensitive issues have not been allowed. माननीय डिफेंस मिनिस्टर के क्वेरी पर अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो उसकी स्थिति मैंने स्पष्ट कर दी है अलग से। शुरू की बात मैंने स्पष्ट कर दी कि शुरू में एलओपी साहब ने जो बात अपनी रखी थी वो मैंने आपके सबके सामने उनसे निवेदन किया था। उन्होंने अपने नोटिस को पढ़ा था। प्लीज आज जो चीजें लिस्टेड है उसके अतिरिक्त मैं कुछ और नहीं कर सकता और कोई नोटिस आज नहीं है। प्लीज। Time for a break in the bulletin. On the other side, news from the Lok Sabha. We will focus on India's strategic partnership with Germany. Technology and economy remain the critical core of Germany's policies in which India is a partner. The most important is to see that how this green and sustainable partnership can transform India's growing economy. Welcome back to House Highlights. Let's now take a look at the key takeaways from the lower house proceedings today. The Lok Sabha approved the demand for supplementary grants, the first batch for FY 2022-23 and demand for excess grants for FY 2019-20. Earlier, Finance Minister Nirmala Sitharaman responded to the discussion on demand for grants in the Lok Sabha. Responding to the concerns about India's import dependency on fertilizers, she stated that the country, which is a large importer of fertilizers, will now have to work towards self-sufficiency. The fertilizer subsidy that we are demanding as a supplementary is 1,09,288.95 crores. And I want to highlight the fact
that India, which is largely an importer of fertilizers, will have to now also start working on self-sufficiency as regards fertilizer manufacturing in this country, and a lot of efforts are going on that score. Responding to members' concerns about Manrega, Finance Minister said that there is a declining demand for jobs in rural areas. There is now very obviously a declining demand for jobs in the rural areas. In the rural areas, the demand for Manrega in the recent past has been coming down. However, 73,000 in the BE and also 16,400 now. It is not coming down. People are not having the opportunity of doing jobs. Manrega is a demand-driven program, sir. Demand-driven. Yeah. And if demand doesn't come, should I read it as it's going up? Referring to whole price index, WPI, numbers for November, Nirmala Sitharaman stated that it is at a 21-month low. Regarding concerns about the strength of the rupee, referring to reports, she said that Indian rupee has strengthened against the dollar and is doing much better than other market economies. Say the inflation data in November of 2013 was at 19.93%. And the earlier month in October, it was 18.19%. WPI inflation comes to 21 months में सबसे lowest में आया है. 5.85% year on year, November 22. WPI inflation was 8.39% in October, whereas in November it's 5.85%. It is a matter of fact. Every report has told you that Indian rupee against every other currency has only strengthened. Yes. And against the dollar, we have performed much better than many other emerging market economies. The Constitution Scheduled Tribes Order Second Amendment Bill 2022 was taken up in Lok Sabha today. Several members expressed their views on the bill that seeks to amend the Constitution Scheduled Tribes Order 1950 to modify the list of scheduled tribes in Tamil Nadu. Pratima Mondal of the Trinamool Congress said that the youth of the tribal groups should be provided a platform for free education and skill development. The need of the hour is to provide the youth a platform for free education and skill development in order to help in their upliftment and better future. Sir, inequality is the most prominent disadvantage witnessed among the scheduled tribes of India. That too in every step, beginning from birth to reaching the pinnacle of careers, and at every step they face challenges. There is a lack of proper health center in areas inhabited by scheduled tribe, and thus there is a higher infant and maternal mortality rate amongst them. Before the start of the question hour, opposition members demanded a discussion over various issues, including the India-China border clashes in Arunachal's Tawang sector. Lok Sabha Speaker Om Birla appealed to the members that question hour is important and they should respect it. आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं, आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं। Union Minister Ashwini Vaishnav replied to a question raised by Shiv Sena MP Vinayak B. Raut during question hour in Lok Sabha regarding BSNL optical fiber network.
मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था। सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले के कितने ग्राम पंचायती को ओएफसी कनेक्टिविटी होकर आज तक ग्राम पंचायती का कार्यान्वयन हो रहा है? बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली बीबीएनएल के जरिए या बीएसएनएल के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। Congress leader of the House, Adhir Ranjan Chaudhary, demanded a discussion on the Indo-China border situation. He said that late Prime Minister Pandit Jawaharlal Nehru had allowed a discussion in Lok Sabha on the Indo-China war in 1962. Lok Sabha Speaker Om Birla said a decision will be taken on it in the meeting of the Business Advisory Committee. Members raised matters of urgent public importance in the Lok Sabha during zero hour. Issues including a steep hike in air tickets rate from Delhi to Kerala, subsidy for harvesting to control stubble burning, smuggling of cows and Bihar hooch tragedy were raised in the lower house. Take a look. बिहार में सर शराबबंदी है। शराबबंदी से हमारे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन शराबबंदी के कारण अगर मौत होती है और अवैध व्यापार होता है तो हमारे लिए चिंता का विषय है, और नीतिगत सरकारें निर्णय लेती हैं। लेकिन आज कल शाम से लोग अभी वर्ल्ड कप का स्कोर देखते हैं, और कल शाम से मैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का स्कोर देख रहा हूं कि कितने लोग मरे हैं। 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 और अभी सैकड़ों लोग मौत से जूझ रहे हैं जिनकी आंख की रोशनी जा रही है। आखिर ये कहां का न्याय है? झारखंड हमेशा गौ तस्करों के निशाने पर रहा है। इधर हाल के वर्षों में गौ तस्करों के हौसले परवान चढ़े हैं। इनके हौसले इस कदर बढ़ गए कि कुछ माह पूर्व एक महिला दरोगा संध्या टोपो को कुचलकर हत्या कर दी गई। गौ तस्कर एक बड़ा सिंडिकेट है जो देश भर में काम नहीं कर रहा, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अपराध बन चुका है, और इसके तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हैं। That's all in today's House Highlights. Keep watching Sansad TV for all the parliamentary updates. Good night.